Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, after covering the last topic, which was regarding the color of objects, now we come to the exercise. And the first question is, I expect that you would be doing it yourself. Do it yourself. DIY means do it yourself. And I will just quickly go over these questions. The first question says, the first part of the first question says they can carry thousands of phone conversations at the same time. Now recall all the topics that we have covered. उसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें लिखा गया है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि हज़ार टेलीफोन कॉल्स ले जा सकती है. They can carry thousands of conversations of phone calls at the same time. That is fiber optics, which we studied there. Question number 2 says, question number 1 part 2 says the bending of light when it enters from one medium to another. क्या कहते हैं उसको जब light bend होती है? Refraction. The third part of the first question is the angle of incidence at which maximum refraction occurs. उसे क्या कहते हैं? The angle of incidence जिस पे जो है refraction maximum, तो critical angle हो गया. Fourth part, the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in another medium, इसे क्या कहते हैं? Refractive index. The splitting of white light into its components, इसे क्या कहते हैं जब रोशनी जो है वो अपने रंगों में तकसीम होती है? Dispersion. Now question number 2 part 1, and circle the correct answers in the following. When a light ray passes from one medium to another at an angle, तो कौन सा फिनोमेना होता है? Refraction. Part B इसकी चॉइस का. Question number 2 का सेकेंड पार्ट है, which of the following objects does not reflect light? कौन से इनमें से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होती? तो रिफ्रैक्शन सिर्फ उसी वक्त होती है जबकि रोशनी की शुआ एक मीडियम में से दूसरे में दाखिल हो जाए. तो यहाँ पे मिरर जो है, यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता, रिफ्लेक्शन होती है. Now the question number 2 part 3 is the splitting of white light into its component colors is known as dispersion. Question number 1 part 4, a ray of light strikes at an angle on one side of a rectangular prism, glass prism. Which diagram shows the right path of the ray? तो ये चार डायग्राम्स दिए उनमें से कौन सा जो है ना वो path of ray शो करता है? That is part C. Now question number 2 part 5 is we see a mirage due to mirage का जो phenomena है. Why does it happen? It happens because of total internal reflection. And the sixth part is a coin in the bowl becomes visible when water is added. It is because of refraction of light. Part B इसका. Question number 2 part 6 question है, a coin in the bowl becomes visible, यानी कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक प्लेट रखी थी उसमें कॉइन रखा था, पीछे होके आपने देखा पानी डालने के बाद तो नज़र आ गया, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ फिनोमेना था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना था. क्वेश्चन नंबर 3, गिव शॉर्ट आंसर्स. Now this is question number 3, give short answers. What happens when light travels from glass into air at an angle? ये पेज 96 पे इसका जवाब है. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये आपने इसकी डेफिनेशन ली हुई है पेज नंबर 95 पे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 पेज 95 पे इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शंस? तो अगर जब प्राइमरी कलर्स को रेड ब्लू ग्रीन को मिक्स करते हैं क्या होता है? वाइट लाइट बनती है. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, व्हाई डू यू सी कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? मुख्तलिफ कलर्स के ऑब्जेक्ट्स के कलर्स क्यों नजर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, आंसर ऑन पेज 102. Question number 3 part 6, define critical angle, page 95. Question number 3 part 7, state laws of reflection, page 94. Question number 4 है define refraction of light, discuss the effects of reflection with examples. तो पीछे टेक्स्ट बुक में पेज 92, 93, 90 ये इसके ऊपर इसके आंसर दिए हुए और ये फिगर 9.1 और 9.1 और 9.4 को देखना है इसको. What define total internal reflection? यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है?
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पेज 98 पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पेज 99, एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना इन द फॉलोइंग। ये डायग्राम जो बनाया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक देयर इज वन प्रिज्म ऑन व्हिच व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट अपॉन, it splits up into 7 colors, then you have the second prism and that combines it into white light. Explain this phenomena. तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है पेज 99 पर, और फिगर 9.14 पार्ट बी के ऊपर लिखा हुआ है इसका। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर 9। यू प्लीज़ डू दिस ऑन कंप्लीट एक्सरसाइज, और आई एक्सपेक्ट कि आपको ये एक्सरसाइज करेंगे और जिस तरह क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी तरह उसको जवाब देंगे, और थॉरली फाइंड इट आउट योरसेल्फ। ड्रॉ डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं, डायग्राम्स को लेबल करना है, हेडिंग्स कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। कोई दुश्वारी हो तो मुझे अपने फ़ोन पर बात कर लेना है एट 0333 551635 और 033654733312। Thank you very much.